In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Today I have brought a summary of Twelfth Night, a comedy play by William Shakespeare, and MCQs, multiple choice questions from the play, which I have carefully selected for you for your upcoming examination, and this is specifically for the university students. I hope you would like my video. Please don't forget to press like button, share it, and subscribe it if you are not subscribed before. Now a summary for your revision. In the kingdom of Illyria, a noble man named Orsino lies around listening to music, pinning away for the love of Lady Olivia. When the play opens, we see that this is the kingdom. The play is set in Illyria. आपको बताती चलूँ कि play जो है वो Illyria में set हुआ, setting इसकी, और Orsino was the Duke of Illyria. और जब play open होता है तो हम देख रहे हैं कि वो music सुन रहा है, and he is grieved. He looks very grieved in the love of Lady Olivia. He cannot have her because she is mourning for her dead brother and refuses to entertain any proposals of marriage. इसका मतलब है कि ऑर्सिनो ने ऑलरेडी भेज दिया, उसको प्रपोजल भेजना वो चाह रहा है और भेजा भी है, जिसने पहले भी रिफ्यूज़ किया, इसलिए कि she is at present grieved because of the death of her dear brother. Meanwhile, off the coast, a storm has caused a terrible shipwreck. और उसी दौरान हमें पता चलता है कि एक तूफान आया है समंदर में और एक कश्ती तबाह हो चुकी है. A young aristocratic born woman named Viola is swept onto the Illyrian shore, and we meet a lady, a very noble lady belonging to a noble origin, whose name is Viola. और वो भी चूँकि उस शिप रैक की वो सर्वाइवर थी और वो साहिल पे हमें खड़ी नजर आई. Finding herself alone in a strange land, she assumes that her twin brother Sebastian has been drowned in the wreck and tries to figure out what sort of work she can do. Now she comes to believe, and she assumes that her brother has drowned. He could not survive. So now she looks forward and thinks what job she can do in order to survive. But since lady, a friendly sea captain, tells her about Orsino's courtship of Olivia, and Viola says that she wishes she could go to work in Olivia's home. Sea captain उसकी हेल्प करता है, ऐसे कि उसको स्टोरी सुनाता है. उस एक तो एलेरिया के बारे में, वो जो आइलैंड है उसके बारे में बताता है, और फिर उसको बताता है कि यहाँ पे एक ड्यूक है Orsino, who is in love with Lady Olivia, but Olivia refuses him. Immediately Viola, she thinks that she should go to Lady Olivia home and serve her. यानी जब तक उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने लैंड वापस कैसे जाए या कुछ, उसे पहले खुद को इस्टेब्लिश करना होगा. इसके लिए उसे जॉब की ज़रूरत है, और वो चाहती है, सी कैप्टन को वो बताती है कि वो लेडी ओलिविया के घर जाके उसको सर्व करे, और मतलब एज अ जॉब वो वहाँ पे सर्विस कर ले. तो लेकिन लेडी ओलिविया जो है वो चूँकि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करती, तो वॉयला, नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज टू गो टू द ड्यूक ऑर्सिनो, कि वो उसकी कोर्ट में जाए. बट बीइंग अ फीमेल, शी फील्स सम इनसिक्योरिटी टू गो टू ड्यूक्स कोर्ट, सो शी डिसाइड्स टू डिसगाइज हरसेल्फ. वो ये चाहती है कि वो भेस बदले, वो एक आदमी का, मैन का, एक मर्द का भेस बदल के वो, और अपना नाम सिजेरियो अपना नाम रखती है, एंड गोज टू वर्क इन द हाउस होल्ड ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो, और ऑर्सिनो के कोर्ट में चली जाती है कि वहाँ जाके वो एक मर्द की हैसियत से उसकी अटेंडेंट बन के उसके साथ सर्विस करे. वॉयला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो. अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्ले में जो सिजेरियो है वो एक लेडी है इनफैक्ट, और उसका नाम है Viola. Quickly becomes a favorite of Orsino, who makes Cesario his
page. Viola finds herself falling in love with Orsino. Orsino की शख्सियत ऐसी थी कि वॉयला चूंकि वो तो एक मर्द के भेस में थी लेकिन वो ऑर्सिनो को पसंद करने लगती है और शी फील्स दैट शी हैज़ फॉलन फॉर हिम अ डिफिकल्ट लव टू परसू एज ऑर्सिनो बिलीव्स हर टू बी अ मैन बट व्हेन ऑर्सिनो सेंड्स सिजेरियो टू डिलीवर ऑर्सिनोज लव मैसेजेस टू द डिस्डेनफुल ओलिविया ओलिविया herself falls for the beautiful young Cesario believing her to be a man. अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी के अंदर क्योंकि वॉयला जो है वो ऑर्सिनो के सर्विस में है और वो ऑर्सिनो को पसंद करने लगती है लेकिन ऑर्सिनो वी हैव ऑलरेडी नोन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले कि ऑर्सिनो जो है वो तो लेडी ओलिविया को पसंद करता है और अब वो वॉयला को एज अ जेंटलमैन लेता है कि ये बहुत अच्छा और नोबल ओरिजिन का उसका टेंडेंट है तो मे बी ही शुड यूज हिज सर्विसेज और वो वॉयला को भेजता है कि वो एंड ही गिव्स अ लेटर फॉर लेडी ओलिविया. जब वॉयला लेडी ओलिविया की कोर्ट में जाती है उसको मिलने के लिए और ऑर्सिनो की तरफ से लेटर देने के लिए देन लेडी ओलिविया फॉल्स फॉर अ ब्यूटीफुल यंग मैन हुज नेम इज सिजेरियो. जबकि ओलिविया जो है वो शी फॉल्स इन लव विद दिस जेंटलमैन बिलीविंग हर टू बी अ मैन. वो यकीन कर लेती कि ये एक मर्द है. द लव ट्रायंगल इज नाउ कंप्लीट. वॉयला लव्स ऑर्सिनो. वॉयला जो शिपरेक से बच के आई है और ऑर्सिनो की खिदमत में उसके अटेंडेंट की हैसियत से काम कर रही है लेकिन उसने भेस बदला हुआ है. Orsino definitely we already know that he loves Olivia but Olivia in return loves Cesario and everyone is miserable because they are not getting the same response from the other person. Meanwhile, we meet the other members of Olivia's household, her rowdy drunkard of an uncle Sir Toby. Sir Toby से हम मिलते हैं, very rough sort of and very boisterous type of drunkard person. His foolish friend Sir Andrew Aguchic who is trying in his hopeless way to court Olivia और उसका एक foolish friend है एंड्रियो एग्यूचिक और उसको इनफैक्ट सर टोबी ही घर में लाया हुआ है और उसको वो फूल बनाता है. इनफैक्ट उससे पैसे लेने के लिए उसको फूल बनाता है कि वो अपनी नीस लेडी ओलिविया से उसकी शादी करवा देगा. ओलिवियाज विटी एंड प्रिटी वेटिंग जेंटल वमन मैरिया. हम मैरिया से भी मिलते हैं हु इज अ वेरी प्रिटी अटेंडेंट जेंटल वमन ऑफ लेडी ओलिविया. देन फेस्टी द क्लेवर क्लाउन ऑफ द हाउस एंड मेलवोलियो द डॉवर prudish steward of Olivia's household. When Sir Toby and others take offense at Malvolio's constant efforts to spoil their fun, Maria engineers a practical joke to make Malvolio think that Olivia is in love with him. This is a very funny scene in the play that Maria, she plays a joke, a trick. And she tells Malvolio that Lady Olivia is in love with him. She forwards a letter, supposedly from Olivia, addressed to her beloved, whose name is signified by the letter M-O-A-I, telling him that if he wants to earn her favor, he should dress in yellow stockings and crossed garters, act haughtily, smile constantly, and refuse to explain himself to anyone. Malvolio finds the letter, assumes that it is addressed to him, and filled with dreams of marrying Olivia and becoming noble himself, happily follows its commands. He behaves so strangely and foolishly that Olivia comes to think that he is mad. MOAI alphabets, they stand for my own adored idol. And it is just to befool Malvolio that Olivia is in love with him.
Meanwhile, Sebastian, who is still alive after all but believes his sister Viola to be dead, arrives in Illyria along with his friend and protector Antonio. इसी दौरान वोयोला का भाई जो है वो भी he was rescued. But he believes that his sister Viola is already dead. He also arrives, वो भी इलेरिया पहुंच जाता है और अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है एंटोनियो. एंटोनियो has cared for Sebastian since the shipwreck and is patiently attached to the young man, so much so that he follows him to Orsino's domain in spite of the fact that he and Orsino are old enemies. अब एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन की बहुत ज़्यादा केयर करता है और सेबेस्टियन चाहता है कि वो जाए घूमे फिरे और इलेरिया को देखे, एक्सप्लोर करे उस आइलैंड को. लेकिन एंटोनियो उसको कहता है कि वो उसके साथ जाएगा, उसके साथ घूमे फिरेगा, लेकिन वो एक जगह नहीं जाएगा, ऑर्सिनो के डोमेन में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी और ऑर्सिनो की कुछ पुरानी दुश्मनी भी है. सर एंड्रियो ऑब्जर्विंग ओलिवियाज अट्रैक्शन टू सिजेरियो चैलेंजेस सिजेरियो टू अ डुअल. उधर सर एंड्रियो चूंकि he expects to get married to Olivia, but Olivia is attracted towards Cesario, who is Viola actually in disguise. So he challenges Cesario to a duel. वो उसको लड़ाई के लिए उसको चैलेंज करता है. Sir Toby, who sees the prospective duel as entertaining fun, eggs Sir Andrew on. However, when Sebastian, who looks just like the disguised Viola, appears on the scene, Sir Andrew and Sir Toby end up coming to blows with Sebastian, thinking that he is Cesario. So Olivia enters amid the confusion. Encountering Sebastian and thinking that he is Cesario, she asks him to marry her. He is baffled since he has never seen her before. इन्हें लेडी ओलिविया जब बाहर आती है और ये सारी लड़ाई वो देखती है तो शी इंटरफेयर्स, और जब वो सेबेस्टियन को देखती है वो समझती है कि ये वॉयला ही है क्योंकि दे आर ट्विन्स और वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं. उनके जो फेसेस हैं वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होते हैं क्योंकि वॉयला भी मैन के डिस्गाइज में होती है तो बिल्कुल अपने भाई की तरह लगती है. तो इस तरह से ये है कि दोनों जो हैं वो एक जैसे लगते हैं और ओलिविया उसको फौरन ऑफर कर देती है दैट शी वांट्स टू मैरी हिम. तो वो बहुत हैरान होता है कि इससे पहले तो कभी न वो ओलिविया से मिला न ओलिविया ने कभी उसको देखा, तो हाउ कम दैट शी इमीडिएटली प्रपोजेस हिम. Meanwhile, Antonio has been arrested by Orsino's officers and now begs Cesario for help, mistaking him for Sebastian. Viola denies knowing Antonio and Antonio is dragged off, crying out that Sebastian has betrayed him. Suddenly, Viola has newfound hope that her brother may be alive. अब एंटोनियो को चूंकि वो जाता है रेस्क्यू के लिए अपने फ्रेंड के और वो ऑर्सिनो की डोमेन में चला जाता है. ऑर्सिनो के सोल्जर्स जो हैं वो उसको पकड़ के ले जाते हैं और वो वॉयला, चूंकि वॉयला को वो देखता है, वो समझता है कि ये मेरा दोस्त सेबेस्टियन है, तो वो बहुत ही क्राइज फॉर हेल्प. तो लेकिन वॉयला तो कहती है, ज़ाहिर है वो मैन के डिस्गाइज में होती है, लेकिन वो ये कहती है कि वो तो इसको नहीं जानती और उसने तो कभी इसको नहीं देखा. तो सेबेस्टियन समझता है कि उसने उसको बिट्रे किया. Malvolio supposed madness has allowed the gleeful Maria, Toby and rest of to lock Malvolio into a small dark room for his treatment and they torment him at will. Festi dresses up as Sir Topus, a priest, and pretends to examine Malvolio, declaring him definitely insane in spite of his protests. However, Sir Toby begins to think better of the joke and they allow Malvolio to send a letter to Olivia in which he asks to be released. Eventually, Viola, who is still disguised as Cesario, and Orsino make their way to Olivia's house, where Olivia welcomes Cesario as her new husband, thinking him to be Sebastian, whom she has just married. Orsino is furious, but then Sebastian himself appears on the scene and all is revealed. जब दोनों बहन भाई इकट्ठे एक सीन में आ जाते हैं तो फिर सारी confusion दूर होती है. The siblings are joyfully reunited और दोनों बहन भाई एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं. Orsino realizes that he loves Viola और Orsino को भी एहसास होता है कि Viola has already been attracted to him and he is now attracted to her. Now that he knows she is a woman and asks her to marry him.
we discover that Sir Toby and Maria have also been married privately. Finally, someone remembers Malvolio and lets him out of the dark room. The trick is revealed in full, and the embittered Malvolio storms off, leaving the happy couples to their celebration. तो ये एक बड़ा अच्छा प्ले है, बहुत कन्फ्यूजन भी है इसमें, लेकिन एंड पे जब कन्फ्यूजन इज रिजॉल्व्ड देन एवरीवन बिकम्स हैप्पी एंड दे सेलिब्रेट देयर मैरिज. I hope this has become easy for you to understand. Now coming to MCQs and very important things to cover in these multiple choice questions for you. Who is Orsino in love with at the beginning of the play? Olivia, Viola, Maria, Malvolio. Now we have already come to know जब play शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है this is a duke whose name is Orsino and he is in love with Lady Olivia. Now the second one is complete the quote. If music be the food of love, if music be the food of dash, play on. The correct option is love. This is a very famous quote in the William Shakespeare's play Twelfth Night. Third one is, where does Twelfth Night take place? And we already have seen in the summary as well, it is Illyria. Why is Olivia unwilling to receive any visitors? Because she is hideously deformed. She is terribly shy. She can't speak. She is in mourning for her dead brother. और हमें पता है कि वो क्यों बार बार ड्यूक ऑर्सिनो के प्रपोजल को रिफ्यूज करती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो 7 years के लिए, ये भी आप याद रखिएगा, फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन शी विल बी इन मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, फॉर 7 years. उसने कहा था 7 साल तक मैं अपने भाई की डेथ का मातम करूंगी और मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, मैं कोई अहम फैसले जिंदगी में नहीं करूंगी 7 years तक. How does Viola come to be at Orsino's court? और Viola कैसे Orsino के court तक पहुंचती है? She is shipwrecked nearby. She is captured and made a slave. She is invited to be a guest of Orsino. She is Orsino's daughter? No. The correct option is she is shipwrecked nearby. करीब ही समंदर में जहाज तबाह हो जाता है और she is rescued and she reaches on the shore safely. Why is Sir Andrew Aguecheek staying at Olivia's home? ये Sir Andrew जो है वो Olivia के घर में क्यों रहता है? Whether he is her relative or uncle or whatever. So the correct option is he is trying to court Olivia. और आप याद रखिएगा कि ओलिविया के जो अंकल है जिसका नाम सर टॉबी है, वो सर एंड्रियो इज द फ्रेंड ऑफ सर टॉबी, वो सर टॉबी का फ्रेंड है और एंड्रियो उसको इस लेके आता है, उससे पैसे लेता है और उसको ये कहता है कि ही विल मेक ओलिविया लाइक अग्री टू मैरी हिम. देन हाउ डज वायोला डिस्गाइज हरसेल्फ? She puts on makeup to make herself resemble an old woman. She dresses like a man. She shaves her head, wears a false beard. She doesn't disguise. So the correct option, ये तो बहुत important event है कि वो अपने आप का वो भेष बदलती है, मर्द का रूप अपनाती है. What is Malvolio's position? He is Orsino's fool. He is Viola's butler. He is Sir Toby's butler. He is Olivia's steward. And the correct option is definitely Malvolio is Olivia's steward. What is Sir Toby's great vice? यानी उसकी सबसे बड़ी बुराई या बुरी बात क्या है? और Sir Toby is always drunk. We have seen in the play कि जब भी उसे देखा he is always drunk. So he is a drunkard. Who does Orsino send to carry his messages to Olivia? अब लेडी ओलिविया के लिए जब वो मैसेजेस भेजता है तो वो किसके थ्रू भेजता है? ड्यूक ऑर्सिनो जब देखता है कि उसके वॉयला जो है जब मर्द का भेष बदल के उसकी कोर्ट में आती है और उसे कहती है कि उसे जॉब की ज़रूरत है, तो ऑर्सिनो बहुत इम्प्रेस होता है. वो कहता है कि ये बहुत ही ही लुक्स वेरी वाइज, क्योंकि वो मर्द के भेष में, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत ज़हीन बंदा लगता है, तो why not I should send her
on my behalf to take my letters to Lady Olivia, कि वो Lady Olivia के लिए letter लेके जाए. So it is Viola disguised as Cesario जिसके हाथ ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया के लिए लेटर्स भेज रहा है. Who does Viola fall in love with? जब Viola कोर्ट में आती है and he comes in contact with Duke Orsino and he talks to him, जब उससे बात करती है, he spends time in the court of Duke Orsino, she is highly impressed and she falls in love with the Duke. So Viola falls in love with Duke Orsino. Who does Olivia fall in love with? Or Olivia definitely falls in love with Cesario, who is actually Viola. Then who is Sebastian? Sebastian, as we already know that he is Viola's brother. वो बाद में हमें पता चला कि जिसको Viola ये समझती थी कि उसका भाई डूब चुका है जब कश्ती तबाह हुई, लेकिन Sebastian जो था वो जिंदा था. Who forged the letter that Malvolio thinks is from Olivia? तो जाहिरी बात है कि जो लेटर है वो मारिया लिखती है, because the main trick is played by her. What does the forged letter make Malvolio believe? और ये जो लेटर है डेफिनेटली जब वो Malvolio को देती है तो वो ये यकीन कर लेता है कि लेडी ओलिविया इज इन लव विद हिम. Who takes care of Sebastian after he is shipwrecked? तो Sebastian की केयर कौन करता है? एंटोनियो करता है. एंटोनियो is the person who takes great care of the person Sebastian. Who challenges Cesario to a duel? ड्यूल के लिए कौन, लड़ाई के लिए कौन Cesario को चैलेंज करता है? इट इज सर एंड्रियो एग्यूचीक हु चैलेंजेस Cesario to a duel. What does Malvolio wear in the hope of pleasing Olivia? वो जो लेटर मारिया लिखती है Malvolio को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसमें वो लिखती है कि लेडी ओलिविया की तरफ से उसने लेटर लिखा जिसमें लिखा कि उस अगर Malvolio येलो स्टॉकिंग्स पहने और क्रॉस्ड गार्टर्स तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज शी लाइक्स दिस ड्रेस. तो Malvolio जो है वो वही करता है जो कि लेटर में लिखा होता है. सो ही Maria befools Malvolio to wear yellow stockings and crossed garters. Why does Antonio travel to Illyria? वो क्यों इलेरिया जाता है एंटोनियो? टू बी क्लोज टू सेबेस्टियन. अगर आपको याद हो तो सेबेस्टियन ने कहा था कि मैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस लैंड, दिस आईलैंड, मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ सैर करना चाहता हूँ. तो एंटोनियो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, आई एम रियली सॉरी, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन जो ड्यूक ऑर्सिनो है उसकी डोमेन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी कुछ पुरानी दुश्मनी है जिसकी वजह से ड्यूक मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. लेकिन वो फिर भी जहाँ इलेरिया में दूसरी जगह एंटोनियो सेबेस्टियन सैर करता है तो एंटोनियो उसके साथ साथ रहता है, इस वजह से कि वो उसका ख्याल रख सके, सेबेस्टियन को कोई नुकसान ना पहुँचाए. Why does Sir Andrew try to fight with Sebastian? और सर एंड्रियो सेबेस्टियन से क्यों लड़ाई करता है? क्योंकि सेबेस्टियन जो है वो और वॉयला चूँकि बहन भाई हैं और वॉयला भी मर्द के भेस में है, रूप में है, तो वो दोनों एक जैसे लगते हैं. सर एंड्रियो ये सोचता है कि वॉयला वापस आ गई है दोबारा और लेडी ओलिविया जो है वो वॉयला के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो इसलिए ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन इज Cesario. What do Sir Toby and others do to Malvolio? वो Malvolio के साथ क्या करते हैं? पहले तो उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको लेटर लिखते हैं ओलिविया की तरफ से कि वो येलो स्टॉकिंग्स पहने और गार्टर्स पहने, और जब वो ऐसे करता है तो लेडी ओलिविया यही समझती है कि ये तो ये पागल हो चुका है, और उनसे कहती है कि इसको किसी कमरे में बंद कर दो ताकि ये कोई फस क्रिएट ना करे सेबेस्टियन के आने पे या वॉयला के आने पे. They lock him in a dark room and tell him that he is mad. और उसको ये सर टोबी और दूसरे जो हैं वो Malvolio को बताते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो. What disguise does Festi wear when he speaks with Malvolio? जब वो Malvolio से बात करने जाता है उस डार्क रूम में तो वो क्या पहनता है? सर टॉपस द क्यूरेट, वो क्या डिस्गाइज मतलब क्या बन के जाता है? तो वो क्यूरेट, लॉयर बन के जाता है. हु डज ओलिविया मैरी? एंड फाइनली लेडी ओलिविया किससे शादी करती है? शी मैरीज सेबेस्टियन.
When he realizes that Cesario is a woman, what does Orsino do? और ड्यूक ऑर्सिनो क्या करता है जब वो देखता है कि उसका जो पर्सनल अटेंडेंट है जिसका नाम सिजेरियो है, एक्चुअली ही इज अ वमन. So he orders her executed, he banishes her, he betroths her to Antonio, he decides to marry her. He decides to marry her. Which character does not get married or plan to at the end of the play? कौन सा एक ऐसा character है he does not get married? His name is Malvolio. Olivia refuses to marry for how long? She said in the beginning of the play that she will never get married for 7 years. What does Orsino want to do while he pines for Olivia and listens to music? When he is grieved for Olivia and he listens to music, what does he want to do? He wants to lie on flowers. In Act 1, Scene 2, Viola knows that her brother Sebastian is, the correct option is, missing. Who tells Viola about Duke Orsino? Valentine, Olivia, a passing shepherd, or the ship's captain? Definitely it's a ship's captain who helps her to, or who guides her to be at the court of Orsino. Why does the ship's captain help Viola find a disguise? Definitely for payment. When Maria thinks of Sir Andrew Aguecheek, Maria क्या सोचती है Andrew Aguecheek के बारे में? He's drunk. What does Sir Andrew Aguecheek get wrong about Maria? Her name. When they meet, what does Sir Toby compliment Sir Andrew Aguecheek on? His dancing. Orsino sends Cesario, his new favorite servant, on a very important errand. What is it? Definitely, Cesario को वो किस लिए यूज़ करता है, किस लिए भेजता है, वो सोचता है कि बहुत वाइज है, तो he uses to deliver letters to Olivia. Why is Viola reluctant to carry out Orsino's command of delivering a love letter to Olivia? She loves Orsino. She falls in love with him, and when he gives a letter for Lady Olivia, she is little envious on it. Where does Feste say Olivia's brother's soul is? Hell. How does Malvolio react to Feste's humor? He is critical. Who is talking to Cesario when Malvolio is sent out to meet him? Sir Toby. What message does Olivia give to Cesario to deliver to Orsino? She does not love Orsino. Olivia definitely, again and again, she sends a message to Orsino that she never loves him. What token does Olivia send to Cesario after Cesario has left? Her ring. What does Antonio do with Sebastian after rescuing him from the shipwreck? He cares for him. What do we learn about Sebastian and Viola's family in this scene? हम उन बहन भाइयों की फैमिली के बारे में क्या we came to know that they are of noble origin, and secondly their father is dead. What does Antonio feel towards Sebastian? Affection. What does Viola do with the ring that Olivia wants to give Cesario? Olivia जो है, जो रिंग Cesario को देना चाहती है, तो Viola उसके साथ क्या करती है? Insists Olivia keep it. वो ये कहती है कि ये अपने रिंग अपने पास रखे, चूँकि Viola जो है, she is not a man, she is in fact a woman, but she disguised as a man. उसने तो मर्द का भेस बदला होता है, and Lady Olivia wants to marry him. वो उसको रिंग देती है, लेकिन Viola insist करती है that she should keep it with her. How does Viola feel about Olivia having fallen in love with Cesario? और Viola जब feel करती है कि Lady Olivia has fallen in love with her, thinking her to be a man, उसको मर्द समझ के she falls in love with him, तो she definitely feels pity. वो उसे तरस भी आता है कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि I'm not a man, I'm in fact a woman. Who starts singing late at night? Definitely it's a Feste. What does Malvolio warn will happen if Sir Toby doesn't improve his manners? अगर सर टॉबी अपने आप को ठीक नहीं करेगा तो फिर Malvolio से क्या वार्न करता है कि क्या होगा? सर टॉबी मस्ट लीव.
Who suggests playing the practical joke on Malvolio? Definitely it's Maria. Orsino says that he can tell Cesario, that is Viola, is in love. What does Cesario do? He agrees. She agrees. What kind of song does Festi sing for Orsino? A sad love song. Who spies on Malvolio and knows that he is approaching Olivia's house? It is Maria. What is Malvolio doing as he walks down the garden path? He talks to himself. What does Malvolio find on the garden? इसीलिए तो वो उसको पागल समझते हैं और कहते हैं कि लेडी ओलिविया भी कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, और वो सब भी उसको पागल कहना शुरू करते हैं and makes him believe at the end that he is mad. What does Malvolio find on the garden path? That is a letter जो कि मारिया ही उसके लिए फेंकती है from lady, मतलब वो ये शो करती है कि ये लेडी ओलिविया ने उसके लिए फेंका है. What are the initials of the unknown being to whom the letter is addressed? M-O-A-I. Now the stockings, does the letter request that the reader wear to prove they return Olivia's love? That what is the color of the stockings? That is yellow stockings, you must remember. Who does Cesario meet and speak with first outside Olivia's house? That is Festi. What does Olivia do when Cesario politely rejects her message of love? Olivia क्या करती है जब Cesario ज़ाहिरी बात है उस पर तरस खा रहा होता है, जो कि इनफैक्ट वायला होती है, और she accepts it. Olivia accepts when she is rejected by Cesario. Why does Sir Toby want to keep Sir Andrew Aguecheek around? To spend his money. ज़ाहिर है वो मनी के लिए ही उसको बेवकूफ़ बना रहा होता है कि दैट शी विल मेक हर नीस ओलिविया make her understand that Sir Andrew Aguecheek wants to marry her, this and that. What does Sir Toby encourage Sir Andrew Aguecheek to do with Cesario? That is duel. Why is Antonio unsafe in Illyria? Antonio क्यों Illyria में unsafe था? Because Orsino वो बता देता है वोयला के भाई सेबेस्टियन को, वो बताता है कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ सैर के लिए जाऊंगा, instead of except the domain of Orsino, क्योंकि Orsino की और उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है. Then what does Olivia think Malvolio can help her with? That is her strategy. What do Sir Toby, Fabian, Maria pretend to believe about Malvolio after Olivia sees him? Olivia जब उसको विजिट करती है, उसको देखने जाती है Malvolio को, और देखती है कि वो तो पागल हो चुका है और वो she thinks that he is mad. तो Sir Toby, Fabian और Maria जो हैं वो pretend कर रहे होते हैं कि definitely he is possessed. Where do the servants and Sir Toby lock Malvolio? आपने देखा कि उसको डार्क रूम में बंद कर देते हैं. What does Antonio say he will do to Sir Andrew Aguecheek on Cesario's behalf? That is, fight him. Who does Festi spot near Olivia's house and try to persuade to return to the house? That is Sebastian. What does Sebastian do when Sir Andrew Aguecheek attacks him? डेफिनेटली वो उसको अटैक कर देते हैं सेबेस्टियन को, ये सोच के कि ये वॉयला ही है, सिजेरियो है जो दोबारा आ चुका है, और वो बहुत जेलस हैं कि लेडी ओलिविया भी उसको पसंद करती है, उसके विजिट्स को बार बार. तो वो सर एंड्रियो जो है जब सेबेस्टियन पे अटैक करता है तो सेबेस्टियन चूँकि ही इज़ अ मैन, डेफिनेटली वो पहले वॉयला पे भी अटैक कर चुके होते हैं, लेकिन वॉयला इज़ अ वमन, तो वो स्केप कर जाती है, वो भाग जाती है. वो सिर्फ इस डर से भागती है कि कहीं वो उसके डिस्गाइज में वो कहीं रिवील ना हो जाए उसका सीक्रेट कि वो एक औरत है, तो वो भाग जाती है. लेकिन सेबेस्टियन चूंकि एक वाकई एक मैन है तो वो उसको सर एंड्रियो का मुकाबला करता है और उससे मारता है. व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सर टॉपस, द फिगर फेस्टी ड्रेसेस अप एज इन ऑर्डर टू टॉर्मेंट Malvolio? A priest. What does Malvolio beg from Festi while in the dark room? Malvolio Festi से क्या मांगता है कि मुझे लाके दें? Paper, ink and light. How does Sebastian feel while Olivia is showering him with affection and gifts? Sebastian जो है वो जैसे ही आता है तो लेडी ओलिविया she shows affection and she presents gifts to him. तो वो बहुत वो हैरान होता है but he is happy, लेकिन खुश भी होता है कि चलें लेडी ओलिविया has fallen in love with him. Who does Antonio mistake for his friend Sebastian?
that is Cesario. एंटोनियो डेफिनेटली अपने दोस्त की तलाश में, सेबेस्टियन की तलाश में जाता है, लेकिन जब लेडी वॉयला को देखता है इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो तो वो परेशान हो जाता है. वो ये कहता है कि ये मेरा दोस्त सेबेस्टियन है. व्हेन ऑर्सिनो थ्रेटन्स टू किल हर सिजेरियो फॉर बिट्रेइंग हिम, व्हाट डज वॉयला से? जब वॉयला को जब ऑर्सिनो थ्रेट करता है कि वो उसे मार देगा क्योंकि उसने उससे धोखा किया है, तो दैट शी लव्स, व्हाट डज वॉयला से? वॉयला क्या कहती है? वॉयला रिस्पॉन्ड्स दैट शी लव्स हिम, शी लव्स ऑर्सिनो. What happens when Viola, Cesario and Sebastian finally come face? जब दोनों बहन भाई फेस टू फेस आते हैं तो वो क्या करते हैं? They ask many questions from each other in order to confirm that they are brother and sister. How does Orsino feel after realizing that Olivia has married Sebastian? Orsino को कैसे क्या फील होता है जब वो कहता है कि ओलिविया ने सेबेस्टियन से शादी कर ली? He remains very indifferent. What does Festi do as the last character on the stage? He sings a sad song. Shakespeare probably wrote Twelfth Night dash of his career, in the beginning, in the middle, in the later part, at the end, so the correct option is in the middle. What is Twelfth Night's alternate title? The alternate title of Twelfth Night is What You Will. Remember this thing. The alternate title is What You Will. What holiday is the term Twelfth Night probably a reference to? यानी वो कौन सा हॉलीडे है जिसके ट्वेल्थ नाइट जिसको रेफर कर रहा है? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज एपिफेनी. Epiphany is definitely an annual Christian feast celebrating the events usually on January 6th. 6th January, that makes the 12th day after the Christmas. So, what holiday is the term Twelfth Night probably refer to? That is Epiphany. Now, which of Shakespeare's other plays also feature a woman disguising herself as a young man? So, The Merchant of Venice में भी कुछ इस तरह का ही था. A woman disguises herself and As You Like It. Orsino compares women somewhat unfavorably to, यानी Orsino जो है Twelfth Night में women को किससे compare करता है? Roses से. So, thank you all. I have tried my level best to cover all the important events in the multiple choice questions, and they will definitely help you for your upcoming examination, and I hope you have liked my video. Thank you for watching my video.